Hello guys, welcome back to the channel Side Dental Vlogs. I am Dr. Abhishek back with another video, and if you are viewing this channel for the first time, I make videos on dentistry, dental related topics. So today's topic will be, it's interesting like whether to do a single sitting RCT or multiple sitting RCT. So आजकल हम लोग सब root canal करते हैं, we all do root canal treatment. So various kind of patients come to our clinic. So some patients are very cooperative, some patients want their work to be very fast and they don't want to waste their time. So we often get confused whether to do a single sitting RCT or a multiple sitting RCT. What are the factors which will determine कि आप single sitting करेंगे या फिर आप multiple RCT करेंगे? तो सबसे पहली चीज single sitting RCT, what is the criteria first? So single sitting RCT, it requires a lot of energy, it requires a lot of time, and the main thing between a single sitting and a multiple sitting RCT is choosing of the proper case. The case is very much important whether you have to do a single sitting or a multiple sitting RCT. So in my opinion, there are a few points which you need to understand before doing any of these procedures. So first we'll talk about single sitting. So when you will do a single sitting RCT, तो देखिए single sitting RCT में you will get the money, you will get some extra money for some extra hard work, but it may have many kind of consequences. For example, suppose if you do a root canal on a vital tooth, suppose it's an anterior tooth which is coming to you, and patient doesn't have like so much time and he needs to go somewhere. So at that point of time you can do a single sitting RCT, because first you have to take a radiograph and determine whether the pulp is vital or not. So if you see in the radiograph there is no changes in the periodontal ligament, there is no widening of the PDL space, then you can do a single sitting RCT. Suppose the caries exposure is there and you did a single sitting RCT, so it's fine. It will take only 1 hour or 1.5 hours for a molar tooth. So you did the single sitting RCT, patient is happy. Second scenario, if the tooth is very much attrited, right? अगर tooth का पूरा पान खा के attrition हो गया होगा, and patient will suddenly come to you with severe pain, except like only during the cold weather it happens, and sometimes in the summer season also, like the tooth will be attrited and the patient will come to you saying that बहुत दर्द हो रहा है सर कुछ करिए. Then at the same time you need to say you need to do a single sitting RCT, otherwise you may have problems later. So according to me, if you do a single sitting RCT in these kind of cases, the chances of failure is less. But if you do a single sitting RCT in a case in which there is abscess, if there is the periodontal widening, if pus is oozing out, if the infected canal is infected, so how you will understand like how is the canal infected? So you'll get some kind of foul smell while doing the access opening. So these kind of cases you should never do a single sitting RCT. So those cases you always do multiple sittings, and you can place various kind of intracanal medicaments like calcium hydroxide, which is easily available in the market. So we have UltraCal XS, then you can have AvuCal. I suggest to use UltraCal because it is the best available. I think it's available with all the dealers. So after single sitting RCT, if the case is infected, you clean the canal nicely. You prepare the canal till 4% 25 on the very first day. 4% 25 means the taper and the width of the canal, you should prepare the canal apex till 25 and 4% तक आप prepare कर देंगे. Then you clean it nicely with saline. And I don't suggest the use of sodium hypochlorite in the first apartment itself. Yes, you can give 2 to 3 drops or very less, because sodium hypochlorite itself can cause some irritation in the periapical tissue. So the main thing is what you want to do is you need to clean the canal and leave it open for 24 hours. Then you can recall the patient and do the BMP again till 6%, and then you can give some amount of calcium hydroxide through lentillar spirals or your Rotaриan instruments into the canal. So what will happen? So calcium hydroxide is having a high pH, right? उसका pH बहुत ज्यादा रहता है और आपके पेरियापिकल टिश्यूज में पस रहता है, तो वो हाई पीएच जो है उस पीएच एसिडिक एनवायरनमेंट जो पस वाला एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा. और ये सिंगल सिटिंग में तो पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट यू नीड टू हैव 3 to 4 सिटिंग्स इन अ केस वेयर इट्स इन्फेक्टेड.
नाउ सेकंड पॉइंट हम आते हैं पैसे की बात। तो सिंगल सिटिंग आरसीटी में क्या हो रहा है, आपको एक बार में ही आपने जो पेशेंट से 3,000 3,500 रुपए आपको मिलने वाले हैं सिंगल सिटिंग के, या फिर 3,000 भी। तो समटाइम्स आई सी द पेशेंट, इफ द पेशेंट इतना गरीब है और उतने पैसे नहीं है पेशेंट के पास, तो मैं नॉर्मल चार्ज में ही सिंगल सिटिंग कर देता हूं। लेकिन इफ इट इज अ मोलर आई चार्ज 500 or 1,000 एक्स्ट्रा। सो सी आपको आपके खुद के ऊपर लेके देखना है। सपोज आप खुद एक पेशेंट है एंड आपको सिंगल सिटिंग की जरूरत है, तो अगर आप पेशेंट है तो यू आर पेइंग 4,000 to 5,000 रुपीज फॉर वन टूथ, और वो थोड़ा सा पेशेंट को खराब लगता है, या फिर उतनी अच्छी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, या फिर पेशेंट इज फ्रॉम मिडिल क्लास, तो किसी को भी भाई बुरा लगेगा इतना खर्चा करना। तो यू शुड नॉट टेक लाइक एक्स्ट्रावेगेंट मनी फ्रॉम द पेशेंट, क्योंकि देखिए आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, राइट। तो अगर आप बोलेंगे इस तरीके से कमर्शियल तरीके से कि आप सिंगल सिटिंग कराना चाहते हैं या मल्टीपल सिटिंग कराना चाहते हो, सिंगल सिटिंग का 4,000 लगेगा, नॉर्मल मल्टीपल सिटिंग करेंगे तो 2,500 लगेगा, तो यू शुड नॉट डू दिस वे। आपको केस सेलेक्ट करके सिंगल सिटिंग मल्टीपल सिटिंग करना है। ये भी डिपेंड करता है पेशेंट कहां से आया है। अगर पेशेंट बाहर से आया है कहीं दूर से, देन यू कैन ऑप्ट फॉर कि आप सिंगल सिटिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्टेड केस है तो यू कैन रिफर द पेशेंट टू हिज नेटिव प्लेस, और इफ यू आर डूइंग देन यू नीड टू रिकॉल द पेशेंट अगेन एंड अगेन। सो दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगर आप कमर्शियल तरीके से कि नहीं सिंगल सिटिंग का ज्यादा पैसा लगेगा, इवन आप कंसल्टेंट बुला के करिए, पर सिंगल सिटिंग के फेलियर होने के बहुत ज्यादा चांस है, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। और आजकल काफी ज्यादा न्यू सीलर्स आ गए हैं मार्केट में, बायोसेरामिक सीलर थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन अगर आप बायोसेरामिक सीलर है यूज कर रहे हैं और इन्फेक्टेड केस है, रेयर ओकेजन्स में आप कर सकते हैं, बट यू नीड टू गिव वेरी गुड सीलर्स, एमटीए बेस्ड सीलर्स, रेजिन बेस्ड सीलर्स। 11,000 12,000 की कॉस्ट होती है, तो अगर आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट को उतना चार्ज ले रहे हैं, तो उसी टाइप का मटेरियल भी आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दोज काइंड ऑफ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू गिव गुड क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केस सिलेक्शन, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत जरूरी है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे सर आप किस तरीके से हम लोग ओपीडी में डायग्नोसिस करें, कि हाउ विल वी डायग्नोस कि विच केस इज गोना गो फॉर सिंगल सिटिंग, विच केस इज गोइंग टू गो फॉर रेस्टोरेशन ओनली, विच केस इज गोइंग टू गो फॉर इसके लाइक मल्टीपल आरसीटी। तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल रूल ऑफ थंब बताता हूं। द ओनली सिंपल रूल ऑफ थंब इज इफ द पेशेंट इज हैविंग सिवियर पेन इन एनी फॉर्म, those cases you cannot do filling, you cannot do the simple restoration, those cases you have to do RCT। कभी कभी हमको अपने naked eye से we cannot access, like we cannot see the cavity where it is, so you need to pass the 3-way syringe air through the interproximal areas of the tooth, so there you can find out okay यहाँ पे इस एरिया में पेन हो रहा था, then you need to take a radiograph and तब आपको easily पता चल जाएगा कहाँ पे caries tooth है, right। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि जो 3-way सिरिंज इज ऑफ ग्रेट यूज टू अस, राइट। दूसरा चीज हो गया सर्वाइकल एब्रेशन केस। अब सर्वाइकल एब्रेशन केस में क्या होता है कि हम लोग ये इसी टाइप का है कि एट्रीटेड हो गया टूथ फ्रॉम साइड, एब्रेशन हो गया एंड पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेन। अगर आप देख रहे हैं अरे वाह ये तो एब्रेशन है, मुझे कैविटी कटिंग भी नहीं करनी, मैं डायरेक्ट फिलिंग कर दूंगा, गाइज यू आर रॉन्ग। इस केसेस में जब आप फिलिंग करेंगे जीआईसी से या कंपोजिट से, द पेशेंट इज गोना हैव पेन इन द नाइट बिकॉज यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ इरिटेंट। अगर आप एचेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें पोरस बन जाएगा जो डेंटिन है एंड इट विल कॉज इरिटेशन इन द पल्प एंड इट विल कॉज पेन, राइट। तो अगर आप इस पेशेंट में अगर पेन है और सिर्फ फिलिंग कर दिया आपने सर्वाइकल एब्रेट टीथ में, तो पेशेंट को अगले दिन श्योर पेन होगा, इट मे लीड टू एब्सेस ऑल्सो। सो उन केसेस में आप पेशेंट को बोलें कि सर्वाइकल एब्रेशन हो गया है, ऑलरेडी इट हैज रीच्ड द पल्प चेंबर, डीप सर्वाइकल एब्रेशन एंड यू नीड टू डू अ सिंगल सिटिंग और अ मल्टीपल सिटिंग आरसीटी बेस्ड अपॉन द पेशेंट नीड्स, बेस्ड अपॉन द पेशेंट बजट, बेस्ड अपॉन द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो ये सब केसेस में आप करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एंड और भी एक और केस है, बहुत टाइम क्या होता है ट्रॉमा केस हमारे पास आते हैं, तो समटाइम्स देयर इज अ क्लास एलिस क्लास 1 फ्रैक्चर ऑफ द टूथ। सो पहले उसका रूट कैनाल नहीं कर देना चाहिए या फिर फिलिंग नहीं कर देना चाहिए। यू हैव टू टेल द पेशेंट दैट मिनिमम यू हैव टू वेट फॉर 15 days बिकॉज एज सून एज देयर इज अ ट्रॉमा टू द पल्प देयर इज स्टंट पल्प। उस पल्प को स्टंट पल्प बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट में भी गलत रिएक्शन दिखाता है एंड यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 days बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज
उस टाइम पे आपको पेशेंट को एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन देने हैं एंड 15 डेज बाद यू नीड टू टेक अ रेडियोग्राफ to see if there is any periapical change or if there is a root fracture. So in those cases you cannot do a single sitting RCT, you need to have multiple root canal sittings, right? तो केस सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हूं कि केस सेलेक्ट करना। अब किसी भी केस का उठा के आप रूट कैनाल कर देंगे और बाद में वो फेलियर हो जाएगा तो बॉस आपके ही पीछे पेशेंट फिर बोलेंगे कि सर आपने क्या किया, मुझे ऐसे पेन हो रहा है। तो आई होप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और वो रेड बटन जो दिख रहा है उसको दबाइए एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मैसेज करिए आपके पर्सनल मैसेजेस मुझे साई डेंटल व्लॉग्स इंस्टाग्राम में, वहां मुझे आपको फोटो दिख जाएगी और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअली कुछ अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो टिल देन हैव अ वेरी गुड नाइट एंड टेक केयर।